with the session. So first we'll start with a very short poem which goes like मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे Good evening, everyone. Having conducted 5 successful sessions, we are all set once again to tread upon the path of progress, and we feel extremely elated to welcome you all to an enriching session titled Career in Indian Army, a Primer. First of all, a very warm welcome to Captain Dr. Sunaina ma'am on the behalf of whole Department of Mathematics, Hansraj College. It is truly said that sheer dedication and hard work always pays off. Ma'am has set an example for everyone by achieving all that we dream for right now. We are very sure that this session is going to be power packed and helpful for each and every student. I would now like Anveshadi, the President of Mathematics Department, to introduce you all to our guest speaker today. Good afternoon, everyone. It is rightly said that if you see the moon, you see the beauty of God. If you see the sun, you see the power of God. And if you see the mirror, you see the most beautiful creation of God. Believe in yourself. And we, at the Department of Mathematics, Hansraj College, strongly believe that your career and your approach towards life lies in your own hand. So we came up with this initiative of Lakshya, the career talks, and the name itself suggests its purpose. We, through their career talks, try to provide career guidance to all the students and help them with their doubts related to careers. So far, we have successfully conducted many sessions of Lakshya and received a spectacular response from the audience. Continuing with the series, let me introduce you all with the keynote speaker of Lakshya, the Career Talks, episode 3 of this session, and she is none other than Sunaina ma'am. मैम वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन देना सूरज को रोशनी देने जैसी बात हो जाती है बट स्टिल इट्स द फॉर्मेलिटी वी हैव टू डू इट so we have with us today Captain Dr. Sunaina ma'am. She has 16 years of diverse and enriching experience in administration, management, education, teaching and training. She is also a certified life coach from Yari International Non-Profit Organization, San Francisco, California, USA. She has served with Indian Army as an intelligent corps officer. She has also worked with Delhi University and IILM Management School. Please tie your seatbelts. This list is very, very long. She has done her graduation in psychology honors from Indraprasth College of Delhi and masters from Punjab University, Chandigarh. She has also done MBA HR from Symbiosis Pune and PhD in organizational behavior. Her areas of interest are emotional intelligence, career development, stress management, sports psychology, employability, and enterprise skills development, personality development, and research. She has attended and presented papers in national and international conferences. Many of her papers got published in international journals of psychology and management. She is also a lifetime member of Indian Career Development Association, Haryana Psychological Association, Indian Academy of Health Psychology, and Association of Positive Psychology. She has also written a book titled Authentic Leadership and Psychological Capital. She is an outstanding sportswoman too and has presented Haryana State, Delhi University and Punjab University at national level and all India inter-university level in handball. Ma'am, is there anything you have left out? She has a strong passion for teaching and counseling as she is now educational trainer and life coach. She conducts educational training and workshop for students and teachers in rural areas also to help the underprivileged students in building their career. Now she has started an awareness program, Mission Join Indian Army, Live Life Extraordinary for defense aspirants, where she is guiding and motivating students to join Indian Army. It is rightly said that the fragrance of a flower spreads only in the direction of wind, but the goodness of a person spreads in all the direction. And today, Sunaina ma'am with us is the living example of this quote. Ma'am, I am sure after seeing your beautiful smile and listening to your voice, everyone is excited to listen to you.
So without taking much time, I, Anvesha Kushwa, on behalf of the Department of Mathematics, Hansraj College, extend you a very hearty welcome, ma'am. Thank you so much, Anvisha. So kind of you. Thank you, sweetheart. Thank you, Hiya also, Sanskriti also, and Khushi also. Thanks to each one of you. So now I request you all to stay muted and we'll open the session for the audience in the end when you can come up and ask your queries. By then you can post all your questions in the chat box. So let us not delay this further, and my first question to you, ma'am, is that being from a civilian background, what motivated you to join the Indian Army and what is the experience while you do training and also after you get posted? Fine. So coming from the civilian background, but my background was very strong, being from the civilian also. My grandfather was a freedom fighter. So since childhood हमें बचपन से सुनाया गया था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं. इंसान वही है जो देश के लिए जिए, जो दूसरों के लिए कुछ करके जिए. So at the back of the mind, I always had in mind that I want to do something for the country, something for other people. And when it comes to that, so I think in India, serving in Indian Army is the best option to do that. So that's how I always wanted to do that. But बचपन में मेरे को था कि I want to become a pilot. I was from the sports background. My dad was my coach. So since childhood, I have always seen discipline, training. In my lifestyle, so it was not that difficult also to get adjusted to the forge, and many of my cousins were already serving in army, so I had that kind of experience also. I had seen the forge earlier just from the outside, but after joining forge, let me tell you all, this is such a beautiful organization. And when you pass out from that academy now, you are so damn physically strong, and not only physically strong, तो आप sports में भी हो जाते हो, जो हम पहले हो गए थे. शायद से I was into sports, I was already physically strong, but when you pass out from there, you are much more mentally stronger person. और सच में बच्चों ऐसा लगता है कि अब तो दुनिया जीती जा सकती है, इतना मुश्किल तो नहीं है, because everything, you start believing yourself so much after joining that academy. So that's the that I think that's why Indian Army is doing so well as an organization also, because their selection criteria firstly is too good, because when they select an officer at SSB also, they see each part of your personality. It is just not the outer personality they are looking for, they are looking for much more your inner personality, which is the most important thing. So that's why pehle they select the best of the boys or girls, and after that they train them, because जो भी वहाँ लड़के और जो भी वहाँ लड़कियां जाती हैं, when they pass out from there, the boys become the gentlemen and the girls become the women officer. So that's how they train. And when you go to the academy, they work upon basics, bacha, which is very very important, and you all should start working on that. आपको हमेशा ऊपर पहुंचना होता है, और हम बेसिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं. When you will go to the academy also, there they start working on your basic means how to make your own bed, how to put that mosquito net, how to all your dining etiquettes, how to wear even a uniform. And if you really want to do well in your life, so we should never forget about the basics. We should start from the basics. And now, so when I was in academy, I was in sports, so itni mushkil nahi hui thi. But yes, when during my SSB also, it was not that difficult, because बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 10 दिन का गाइडेंस प्रोग्राम ले लो और उसके बाद ओवरनाइट पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी. इट नेवर हैपेंस बच्चा. फौज इज नॉट अबाउट कि 10 डेज के अंदर nobody can change your personality. You really need to work upon ground, which is the most important thing. And I think sports had already taught me all those things, and it was not that difficult for me to clear the SSB also, because those qualities were already there. So, and I topped in the merit list also when in my SSB at that time. And then I joined OTA maybe I was third in order of merit. When I passed out as junior under officer. I got the end core. And in Forge also had the wonderful time with the best of the officers. I learned a lot. I grew. Yes, there were challenges, but the best part is the army groomed me to take those challenges. Fine. So that is the beauty of this organization. And I had a wonderful 5 years tenure in army. Ma'am, that was so wonderful, and I think you have already answered some of our sub questions that we had.
So No worry, you can ask again. next question is that how did your life get affected by joining the armed forces? Like what all changes you could observe and how difficult was it to manage for you at the beginning? Here, yes, challenges were there because, and I was already mentally prepared that challenges are going to be there. And challenges kahan nahi hai? Whenever a woman is working, that, balancing her life, that challenge will always be there, whether you're working in civil or you are working in army. But yes, army mein it multiplies. It multiplies because of your frequent posting, because of the commitment, because when you are wearing a uniform, you are 24 into 7. You're working 24 into 7. There are no time limits in फौज कि आप इतने से इतने काम कर रहे हो उसके बाद भी when you're serving for the nation, you are working 24 into 7. But Indian Army training really groomed me to take those challenges. Yes, there were the times, जहाँ पे आपको लगता है फौज में, because the number of women officers are very less. Fine, when I was posted in Headquarter 4 Corps, in my first posting also, most of the time I was a single lady officer being posted over there. And that was, yes, we were not that used to. So the complete society is changing, that we really need to understand that. कई बार ऐसा लगता है कि कोई मेल ऑफिसर काम नहीं करता है, तो then they start saying, the person is not competent enough to do that work. And when a lady officer doesn't do the same work, then they comes to the gender again. But yes, you can, आप इस चीज का जवाब दिया जा सकता है किससे? आपकी competence के साथ, आपके right attitude के साथ. That is why I never had much of a problem ever in, adjusting to army. I had a wonderful time with the wonderful officers, and let me tell you, they were so damn motivating. When I remember my first CO, my commanding officer, I have not seen a better human being than him, a better officer than him. Such a nice officer to look upon, to learn. Daily कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने को मिलता था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फाइन. और आफ्टर, देखिए, फौज मैंने बेशक से छोड़ दी थी आफ्टर 5 years अगेन, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट. Our priorities, our life keep on changing, our priorities keep on changing. So fine, when I got married, nothing got much changed, but when my son was born, my complete world changed. उसके बाद मुझे समझ में आता है why ये भगवान से माँ को क्यों compare किया जाता है. Why not they are comparing it to the dad? At least they are also becoming the parent, but why they compare it to the mother? Because what we can feel for our child, no one else can feel that. And same time, because I was wearing a uniform, which is a 24 into 7 job again, and I was a full-time mother, that is also 24 into 7 job, and again married to an infantry officer. बच्चों, फौजी खुद बनना आसान है. When you are uniform, wearing a uniform, फौज trains you for that. But फौजी की बीवी बनना और मुश्किल हो जाता है, because nobody gives you training for that. Fine, so it was much more difficult because we both were due for our field posting. I had a very young child, and I was always passionate about teaching. Uske baad, and in my time there was no permanent commission also, so I really need to take a call at that time ki whether to continue or whether to leave. If I'll continue, then I have to leave after 14 years. So because I had that time now, because I wanted to develop that emotional connect with my child, which is developed in the initial years of his bringing, so I thought, why not to go ahead with that? I would be able to do justice somewhere. So I really want to tell all the girls, if you guys are listening to me, life is always about your priorities, and you really need to decide what your priorities are. Life में हर चीज नहीं मिलती है. If you'll start running after everything, तो हम ना हमेशा restless रहते हैं. Are you getting me? You really need to decide upon your priorities, take the decision, and then stand by those decisions. I'm sure all those girls who are still serving in Forge, they are doing a wonderful job, but they must have compromised on their personal life. I'm sure, because आप हर चीज नहीं मिलती है. But yes, a person like me who is doing personally very well, मैंने अपना प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं मैनेज कर ही लिया है थोड़ा बहुत, तो मैनेज हर चीज हो जाती है. But you go ahead with your priorities. Nothing is right, nothing is wrong. If your job gives you more happiness, please go ahead with that. If your family gives you more happiness, please go ahead with that. दोनों चीजें साइड बाय साइड कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगी. जो जॉब कर रहे हैं उनकी फैमिली भी मैनेज हो जाती है, जिनकी फैमिली हो रही है उनकी जॉब भी मैनेज हो जाती है. बट यू टेक योर ऑन कॉन्शियस कॉल,
what gives you more happiness, because we all are different. That is what the first and most important thing for everyone. If you're going ahead, सक्सेस का कोई मतलब नहीं है बच्चों. सक्सेस बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है. एक गोल को अचीव करना, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी. Sometimes you want to prove yourself in your job, sometimes you want to become a good mother, sometimes good partner, sometimes something else, something to live a healthy life might be a success for someone. So success is very subjective and different for everyone. So you just decide what success means to you, why you want to do that, why you want to achieve that goal. जब तक why clear नहीं होगा ना बच्चा, जिंदगी clear नहीं होगी. That is the first thing you really need to understand that, right? So, ma'am, in the way you told that you left service after 5 years and then you came back to your normal life, the life out of the Indian Army. So, was this transition smooth for you, or did you face many challenges in the beginning? Yeah, change is never smooth. We always resist change. Changes always bring, unrest in your life. Yes, it was not easy for me. And if you ask me here, the most difficult years of my life were after leaving Forge. The next 2 years, it was the most difficult, even not before joining it, everything. So when I left Forge, I wanted to have that balance in my life. Fine, I wanted to move. And but before that, I was a career oriented girl altogether. Throughout my childhood, I was the best all-rounder student of the school, playing sports at school level, at national level, in college also. I was awarded with the Ashwini Kumar Trophy for the best all-rounder sportswomen of the college. Again, I joined Forge. There also I did very well. I was in the toppers over there also. So I was a focused girl. My energy was there. I really want to work, and that used to give me the energy. I thought, now my child needs me. I want to give time to that. But when I came back, I left for just to have a good family life, and immediately my husband got a UN call. He's posted out from there, from India, in fact. He moved to Congo, and I was like, what needs to be done now? I never planned for it. I never planned for it. Then at that time, I was a single mother almost. My husband was not around, dependent also on my parents again because I had a young child, jobless also because I had no job at that time. And I was like, what I'm going to do now? I have never stayed with my own parents after class 12th. I was always in the hostel. How I'm going to adjust with them? मैं उनके साथ नहीं रह सकती. मैं कहा जो अपने parents के साथ नहीं रह सकता, how I'm going to stay with my in-laws? मैं कहा that again would be very difficult. So that was very challenging again to decide what needs to be done. फिर मैंने अपने आप को संभाला एंड मैंने कहा every time you cannot control the situation never goes as per you. What we can do is, we can control how to react to it. Is that fine? So I just decided on that. मैं कहा चलो, I'll start again, I'll start fresh. I went to Gurgaon. I have taken a house on rent over there, and after that again my father supported me. He came and he stayed with me, and for next 2 years I really worked hard. I applied in all the colleges. I applied in many of the schools for the job, and I was, because मैंने पहले अपना नेट क्वालिफाई किया हुआ था, so I got a job in Keshav Mahavidyalaya, but that college was 45 kilometers away from my place. I was staying in Gurgaon sector 57 and Punjabi Bagh 45 kilometers. So morning I used to start, evening I used to come. बड़ी मेहनत लग रही थी यार. उसके बाद मुझे लगा कि मेरी MBA मैंने रजिस्टर करी थी कभी 4 साल पहले. So I thought कि why not to complete it, because मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था ILM Management College. मैं कहा if I'll complete my MBA, already I have a psychology background, so I might get a job in this college. You guys will not believe it. I gave 36 papers in those 4 months, and I cleared all my papers at that time. Or socho, us time I would have thought. So I want to tell you to all young girls, बहुत बार हमें लगता है we start with a negative energy. Oh, I won't be able to do that. I can't do that. ये मेरे से नहीं होगा. और उसके बाद वो end में वो कभी भी नहीं होता है. Once you start with no, if I do this, my life will be completely
different. So why not to at least give it a try? I have these 5 months left. May में मेरा clear हो रहा था. मैं कहा let me. Everybody was like सुनैना कैसे करेगी? You are a single mother. सुबह निकलती है कॉलेज का भी, और because मैंने साइकोलॉजी पहले छोड़ दी थी, so when I was teaching also मुझे लेक्चर तैयार करना पड़ता था बच्चों को पढ़ाने के लिए. I used to really work hard, but my morning used to start at 5 in the morning. I used to get up. I used to prepare breakfast for my dad. मैं अपने बेटे का पूरा बैग पैक करती थी, कपड़े निकालती थी, रेडी करती थी. 7 o'clock I used to leave my home. I used to drive for 1 hour. मेरी मॉर्निंग क्लास होती थी 8:30. I used to come back. फिर घर का खाना बनाती थी, ये सारा करती थी, एवरीथिंग. फिर मेरे को लगा कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा. देन गर्ल्स आई स्टार्टेड टेकिंग मेट्रो. मैं कहा मैं मेट्रो में 1 घंटा जाऊंगी, वापस आऊंगी. एट दैट टाइम एटलीस्ट आई कैन स्टडी. So मुझे लगा everybody has just 24 hours. What you are going to do with those 24 hours make the difference in your life. At that time for me 5 minutes were also important. So I started traveling by metro. So मुझे metro में, you guys will not believe, I used to wear साड़ी, but still मुझे जहां जगह मिलती थी मैं वहां कोने में पकड़ के बैठ जाती थी. कई बार मैं नीचे बैठ जाती थी. And I used to read and underline कि मेरा एक चैप्टर जाते टाइम खत्म हो गया, एक चैप्टर वापस आते टाइम खत्म हो गया. वापस जब मैं आती थी निर्भय को लंच कराना, घर देखना, कपड़े डालना, यूज्ड टू डू एवरीथिंग. इवनिंग आई यूज्ड टू टेक हिम बिकॉज आई वाज द मदर, आई वाज द फादर एट दैट टाइम. आई नेवर वांटेड टू माय चाइल्ड टू फील दैट यू नो माय मदर इज नॉट डूइंग दैट. फिर मैं उसको शाम को लेके जाती थी. वी बोथ यूज्ड टू प्ले ओवर देयर, यूज्ड टू कम बैक, उसको खाना खिलाना सुलाना 10 बजे. देन फ्रॉम 10:30 to 2 o'clock daily or 1:30 I used to study again. I used to give my assignment, I used to submit my assignment on time, और फिर again morning used to get up at 5. So वो 4 महीने was that, but I completed that in May and I got the distinction in that also. And May में मेरी MBA complete होती है, June में तुम्हारा session खत्म होता है, July में I got the job in ILM college. That's how, and my life was so convenient after that. So hard work always pays, bacha. Whenever you think that things are not going in the right direction at that time, just think about the best, at least give it a try. Please don't, because most of the time we channelize energy, you know, wherever you will focus your energy will go that side. So when you start focus on the things where कि on the negative things, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, so your energy is going in that direction. So give positive affirmations to yourself. Yes, I would be able to do it. अगर मैं ऐसे कर लूंगी तो ये हो जाएगा. That's what I have learned from my own life. Those years were not easy, बच्चा. I could have very easily said, oh my God, घर में क्या काम नहीं होता, सिलेंडर भरवाने से लेके, ग्रोसरी लाने से लेके, आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, मेरे डैड को डॉक्टर के पास लेके जाना, निर्भय की तबीयत खराब हो जाती थी, I was the mother. फिर मेड्स को देखना, घर भी ऐसे नहीं संभलता. You have to, it's a full time job. You see your mothers. At that time I was working, I was teaching in Delhi University, I was preparing for my session, I was looking after Nirbhay, I was looking after my dad, I was looking after my home, everything I managed. How? Just by sheer grit which Forge gave me at that time. जब मैं अकेडमी के अंदर रह सकती थी बिना सोए 2-2 दिन 3-3 दिन कैंप्स के अंदर, you know, that mentally they made me so damn strong that I could survive for those one, and those were not easy years for me. My husband was not around, I left everything, I was feeling shattered, and that is the time a person like me also went into almost into depression. I was like, what I'm going to do with my life? क्या मैंने जो किया वो ठीक किया? You start asking yourself. फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं. I think it is just a phase. What I need to do it. I just need to keep moving. और मैं छोटे-छोटे कदम लेती गई. MBA किया, फिर college join किया. वहाँ से बच्चों से मुझे बहुत, because teaching was always a passion for me. That is something which I love doing it. और जब आप अपने job से प्यार करो, passion करो, है ना, तब आपको job नहीं लगती है. तो college जाना मुझे लगता था I'm having good of the time. मुझे मेरे बच्चे मिलेंगे, ठीक है. सो दैट आई यूज्ड टू फील इट, सो आई कुड ओवरकम दैट आल्सो. और उसके बाद सोचो लाइफ कितनी चेंज होती रहती है, आप लोगों की, आपकी प्रायोरिटीज कितनी चेंज होती रहती है बच्चों. सो एंड इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल. वो 2 साल के बाद आई हैड, वी वेंट टू वेलिंगटन. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. देन आई डिड माय पीएचडी एंड अगेन एवरीथिंग इज मैनेजिंग. जॉब भी मैनेज हो रही है, थोड़ा बहुत काम भी कर रही हूँ जिंदगी के अंदर, और एवरीथिंग आई एम एबल टू मैनेज. हाँ, बहुत बड़ा नहीं कुछ करते नहीं सोचती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है बैलेंस इज द की. ठीक है, हर चीज के अंदर, यू नो, इट इज ऑलवेज
to have a meaningful life, which is more important than me, rather than running after the materialistic things, running after such things, you know, how much balance, bank balance, यार पैसे कितने कम ही होते हैं. मैंने तो जितने भी देखे, अदानी देख लो, अंबानी देख लो, still they want to earn money. If I don't have a time to spend that money on my loved ones, then what's the use of that money? I don't understand. Fine. So for me, life is as simple as that. चलिए बताइए और. Ma'am, definitely your life was not that simple and you took the road not taken, the road that most people don't prefer to take. Yeah. And your story, your whole journey is so inspiring for all of us that right now we all discuss among ourselves and we cry over the burden from college, the assignments that we have to do, the tests and all. But Right. listening to you, we feel like that it is nothing in front of what you. Here, let me tell to each one of you, बच्चा, आपकी जो भी life है ना, that's the bestest life. I'm 40 now. Fine. If you ask me what was the best period of my life, that was when I was in college and when I was in university. सबसे बड़ी चीज जब कोई responsibility ना हो बेटा, मैं कह रही हूँ सबसे मुश्किल कोई काम होता है ना, when there are responsibility on your shoulders, when you just can't work as per you. Your life is the best. You are your own boss. What your parent expect, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, मम्मा ब्रेकफास्ट भी वहीं लेके खड़ी होगी, है कि नहीं. मम्मा आज मेरा बेटा बहुत रात तक लेट तक पड़ा है, आज उठाने की जरूरत नहीं है. So you guys get so much of attention from your parents also. You guys are the best one, and energy also, it's peak. अभी पीक एनर्जी है बच्चों तुम्हारा, इतना एनर्जी तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं रहेगी. आफ्टर 30 आपका वो खत्म होने लग जाता है. सो ये 20 वाली जो एज है, 21, 22, 23, यू गाइस आर फुल ऑफ जोश यार. प्लीज डोंट थिंक. और आप लोग सोचोगे, और ये छोटी छोटी असाइनमेंट्स इज नथिंग. कारगिल जैसी वॉर जीती गई है यार प्लानिंग के बाद. थोड़ा सा प्लान करो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन योर करियर. Thank you so much for motivating us, ma'am. And now we have some questions by our audience. So the first question is that people often keep saying that you should have an officer-like personality or you should have qualities of an officer to clear SSB. What exactly are the attributes and the qualities that we should develop during these years? क्या हिया, आजकल ना गूगल बाबा ने ज्ञान भी बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया है बच्चों को, ठीक है. सो व्हेन आई हैड गॉन फॉर माय एसएसबी, मुझे पता भी नहीं था. अब व्हेन दे डिजाइन दीस ओएलक्यूज, मेरे बच्चा, they didn't design it for you guys. They designed it for whom? For the psychologist to assess the candidates. Firstly, are you getting me, all of you? So when it comes to officer like qualities, it is not for the candidates to know. It is more important for the psychologists to know, so that they can assess you in a better manner. That's how they decided. So you, और आप लोग कहाँ फोकस कर रहे हो? गलत जगह पे. What you guys have started doing it, you have started reading, you know, what are those OLQs? Effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, power of expression, social adaptability, cooperation, sense of responsibility, initiative, self-confidence, speed of decision, ability to influence others, determination, courage, stamina. Oh my God. And आपको लगता है ये पढ़ने से आ जाएगी? कितना ही आसान हो जाता फिर तो सब कुछ बच्चा. फिर तो तुम साइकोलॉजिस्ट बनोगे, फौजी थोड़ी ना बनोगे. So first thing, start thinking when it comes to the OLQs, bacha, when they designed it, why did they design it? So that people can assess you better. So earlier when they designed it, there were 29 OLQs, पर वो भी बहुत ज्यादा हो रहे थे. फैक्टर एनालिसिस साइकोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है, उसके हिसाब से उन्होंने 4 फैक्टर्स बनाए. फाइन, 4 फैक्टर्स आगे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस, डायनामिज्म. इनके अंदर उन्होंने उन सारे 15 फैक्टर्स को डाल दिया. बच्चा भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है. आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू. क्या चाहिए फौजी को? एक बच्चा जिसमें बेसिक इंटेलिजेंस है, ठीक है, who understand things, who can grasp the problem, who can find out the solution within the available resources. That's the basic thing they needed. Are you getting me? Basic intelligence. प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम नहीं निकाल रहे हैं,
oh, this is the problem. No, 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 this is also the problem. No, a candidate who just, a candidate, they are looking with the basic intent. बहुत high IQ के लोग नहीं चाहिए, बहुत low IQ के लोग नहीं चाहिए. They just need someone with the basic intelligence. Is that clear? How you can develop that? Just let me know. It is so damn easy. पूरे दिन के अंदर आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. कभी असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही है, कभी फ्लाइट डिले हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है. व्हाट उस टाइम में आप क्या करते हो? पैनिक. सबके सब पैनिक करते हैं. पैनिक करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, एंड यू नेवर ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट. यू ऑलवेज क्रिएट अनदर प्रॉब्लम आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज देयर इन योर पर्सनैलिटी. और आप समझते हो इंटेलिजेंस की ये एबिलिटी पढ़ के आप लोग सब OLQ सीख जाएंगे. बेटा, प्रैक्टिस इट ऑन ग्राउंड. दीज आर द क्वालिटीज विच यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड. नाउ दे आर जस्ट लुकिंग फॉर फ्यू क्वालिटीज. अब उस क्वालिटी में आती है फर्स्ट इंटेलिजेंस, सेकेंड सम पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल ट्रेट. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फलेसनेस. दिस ऑर्गेनाइजेशन आप देखा है भाई, जाने से योर कंट्री कम्स फर्स्ट, देन द मेन्यू कमांड, यू योरसेल्फ इज द लास्ट. आप में से कितने लोग हैं जब मम्मा पूरा दिन घर पे काम कर रही होती है और आपको ये आ जाके लगता है कि मैं थोड़ी हेल्प कर दूं? जस्ट टेल मी, genuinely just tell me, how many of you think that your parent is burdened with the work, you should go out and help them? You're not practicing it on ground. Let me tell you, bacha, when do you think that your friend is under the pressure, you should go out and should help that person? If you want to develop, start doing it. Selflessness is the one quality which you need to develop. You need to practice. Second, adaptability. आप फौजियों को देखिए, कभी -40 डिग्री में रह रहे हैं, कभी 50 डिग्री के अंदर रह रहे हैं, है ना? दिल्ली के अंदर 4 डिग्री होती है. ओ माय गॉड, बहुत ठंडा, मर गए हम तो. ओ माय गॉड, बहुत ठंडा. बॉम्बे वालों के लिए तो 14 डिग्री होते ही हालत खराब हो जाती है. You look at those people, they are staying in -40 डिग्री. गर्मी 28, मतलब 40 डिग्री में बच्चे को बाहर निकाल दोगे तो चक्कर आ जाएगा. They stay, they practice in 50 degree. Adaptability is a very important thing. Third, integrity. This organization, Indian Army, works on that. A person with full integrity. क्लास में क्यों लेट आए? 50 बहाने already as a defense mechanism आपके पास तैयार होते हैं. आपको क्या लगता है अगर आप सच बोल दोगे कोई आपको उड़ा देगा उस टाइम? बट हमारी हैबिट बन गई है ना? हमारी कंडीशनिंग हो गई है. मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था. आई वाज जस्ट सेइंग लाइक दैट. So see, these are 3 personal qualities you really need to inculcate. If you have, well and good. If you don't have, please start inculcating. Fourth is very important, communication skills. Bacha, a leader is there to inspire. You are going to be the officer in Indian Army. You are going to command your men. How you are going to do if you are not able to express yourself, which is the most important thing. And expressing and communication skills does not mean just Angrezi. It means much more. Harvard University says that in a communication skill, 7% time words have just an impact. Rest is what? Your body language, your expressions. Agar main ye aise bataun, okay, fine. And the next is your communication skills, and the communication skills are very important part of SSB assessment. So you all should work upon. Agar main aise padhane lag jaऊं, मैं English तो बोल ही रही हूं, मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा पाऊंगी, थोड़ी देर के अंदर तुम सब लोग भाग जाओगे यहाँ से, है ना? यू विल स्विच ऑफ योर कैमरा, पता नहीं कौन बोल रहा है ना? सो टिल द टाइम व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड वी ऑल कैन लर्न इट. और बच्चा, देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर एटीट्यूड, योर मेंटल स्टेमिना. Harvard have done a study which says that 15% of the time you get a job and success in your life because of the facts and the figures you know. और पूरी जिंदगी आप उस पर निकाल देते हो रट्टे मारने में, स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर, वही 15%. और वो जो बचा हुआ 85% है, what is that? Your right attitude. You never work upon that. And बच्चा, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, what are these? These are skills. What is the meaning of skill which you all can learn?
That is most how you are going to learn. एसएसबी की तैयारी के लिए आपको आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है. ओएलक्यूज को डेवलप करने के लिए आपको ओएलक्यूज को पढ़ने की जरूरत नहीं है. You need to practice it on ground where when you will start saying, oh my god, this is my class, this is my department, maths department, okay, इसका बेस्ट हमें करना है. When you will see, oh this is my college, Hansraj College, ये कैसे गलत जा सकता है यार, wherever I'll take initiative, I'll go out of the way, मैं रात के सुबह के 4 भी बज जाए, but if it is for my college, we are going to work for it. Fine. Then comes your Delhi University, then all India. आप समझिए, आप तब हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे. Communication skills कहाँ? Practice. Only it needs practice. But you don't practice. Positive attitude need practice. It is the conscious efforts, because your mind is conditioned to focus on the things which are not there. So start telling, why not to focus on everything positive. Out आप जो ढूंढने जाएंगे बच्चा आपको वही मिलेगा, है कि नहीं? आप प्यार ढूंढने जाइए, दोस्ती ढूंढने चाहिए, हैप्पीनेस ढूंढने चाहिए. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फाइंड दैट. यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इंडिफरेंसेस, फाइट, व्हाट इज द रॉन्ग इन द पर्सन. आई एम श्योर आपको वो भी ढूंढने से मिल ही जाता है. So it depends where you focus, what kind of attitude you have. और जिंदा दिल इंसान चाहिए फौज में. ठीक है, कारगिल की वॉर अगर जीती गई है वो यंग ऑफिसर्स की वजह से जीती गई है, बिकॉज वो इतने रॉ होते हैं. उनके पास क्या होता है, इट इज जस्ट नॉट द, कोई भी दिमाग से वॉर लड़ेगा कभी नहीं, इट इज जस्ट द जोश इन दैट पर्सन, एंथुजियाज्म, थोड़ी सी कॉमन सेंस है, अच्छी नियत है. जो नहीं भी आता है वो भी सीखने का जज्बा है. आई एम श्योर यू ऑल आर द राइट कैंडिडेट फॉर इंडियन आर्मी. आप सब लोग कर सकते हो. बच्चे एक जेन्युइन इंसान बन के जिए, प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढिए. कैंटीन में भी जाते हैं कुछ बच्चे, रौनक ले आते हैं. द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, योर ऑरा, योर पर्सनैलिटी, इट शुड ओजेस, इट शुड पॉजिटिविटी निकलनी चाहिए बच्चों को देख के. That is what you need to practice. ग्राउंड में मेरी जान, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, आप मेरे पास भी आओगे, गाइडेंस आई कैन गिव यू, और वो गाइडेंस जितना जल्दी ले सको ये भी इसी तरह से मैं तुम्हें बता दूंगी. ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है. ठीक है, आई टेल यू ऑल कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे काम कर सकते हो. मैनेजमेंट स्किल्स मैं तुम्हें बता दूंगी भी कैसे इंप्रूव की जा सकती है. टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी, डिसीजन मेकिंग, व्हाट दे असेस. थर्ड, आई कैन टेल यू हाउ यू कैन वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप समझिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर वही यूज होती है, और बच्चे क्या लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं स्टोरीज लिखने. अरे यार, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक विच दे वांट टू असेस योर अनकॉन्शियस माइंड. और आप सारी की सारी स्टोरीज याद करके जाते हो, कॉन्शियस माइंड से लिखते हो, वहीं ब्लंडर मार देते हो. दे वांट टू नो योर पर्सनैलिटी, योर लाइफ एक्सपीरियंस मेरी जान. दैट इज व्हाट यू नीड टू वर्क. लिखना क्या है, सिंपल. यू शुड बी एबल टू पुट योर थॉट्स ऑन द पेपर्स, एंड व्हेन यू विल डू दैट यू विल सिंप्लीफाई थिंग्स. दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस डेली. प्रैक्टिस से हर चीज सीखी जाती है, कॉन्शियस एफर्ट से हर चीज सीखी जाती है. फर्स्ट थिंग, अगर ओएलक्यूज बिल्ड करने हैं तो बच्चों कहां से शुरू करना है. दिस माइंड इज वेरी पावरफुल. आर यू गेटिंग मी? सो व्हाट यू थिंक, you start feeling. If you're thinking good, if you're thinking positive, you will start feeling positive. You will start feeling, oh I can do that. जब आप फील करते हो अच्छा तो बिलीव अच्छा करने लग जाते हो. आर यू गेटिंग मी? जब बिलीफ अच्छा होता है तो एक्शंस अच्छे लेने स्टार्ट हो जाते हो. गॉट इट? जब एक्शंस अच्छे लोगे तो अपने आप पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, अपने आप ओएलक्यू बिल्ड हो जाएंगे, ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो गाइडेंस प्रोग्राम शुरू में ले लीजिए, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में. 10 दिन के अंदर भाई कोई मदद नहीं कर सकता, और मैं भी सिर्फ गाइड कर सकती हूँ. प्रैक्टिस तो बेशर्ते तुम्हें करनी है. आजकल बच्चे आते हैं, मैम आप अपने गाइडेंस प्रोग्राम में ना प्रैक्टिस नहीं कराते. मैं कहा यार, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे करना है, और अगर तुम खुद से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते तो इंडियन आर्मी में जाने के लायक नहीं हो. प्लीज don't go. You will be a liability to this organization. I have told you the ways to do it. I take my guidance program for 10 days. 10 days में मैं 2 से 2.5 घंटे हर रोज, मेरे पास इतना कुछ है तुम्हें बताने का, मैं उसमें प्रैक्टिस कब करवा दूं. हाँ, मैं तुम्हें डेली बोल देती हूँ, प्रैक्टिस दिस एंड सेंड इट टू मी. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू इट. इन माई व्हेन आई टेक द प्रोग्राम, मैं 2-2.5 घंटे चुप ही नहीं होती. आई वांटेड टू शेयर सो मच विद यू ऑल.
So you need to practice yourself, और वो हफ्ते के प्रैक्टिस से नहीं आएगा बच्चा. All of you need to practice. अगर देखो बहुतों के अंदर ये OLQs ऑलरेडी होंगे, बहुत सारे. आई एम श्योर अगर हिया कोई स्पोर्ट्स के अंदर है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन है, उनको टीम के अंदर काम करना आता है, कुछ बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी अच्छी होंगी, जिनका है उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे एरियाज हैं वेयर दे रियली नीड टू वर्क अपॉन. आपको टाइम लगेगा मेरा बच्चा. You are going to take time in developing those habits. क्योंकि जब भी अपने सपनों को पूरा करने की बात आती है, जब भी अपने टारगेट्स को अचीव करने की बात आती है, जब भी बात आती है क्रिएटिंग गुड न्यू हैबिट्स, ऑल दीज थिंग्स व्हाट दे नीड टाइम, दे टेक टाइम, दे टेक एनर्जी, दे टेक हार्ड वर्क. आर यू गेटिंग मी? और हमें लगता है एक हफ्ता प्रैक्टिस कर ली, एक महीना चेंज नहीं आया. ऐसे कैसे होगा बच्चा? उस आदत को बनने में तुम्हें कितने साल के हो? 20 साल है लगे वो नेगेटिव एटीट्यूड को बनने में. रातों रात कैसे चेंज होगा? उस 20 साल को कम से कम आने वाले 20 महीने तो दे दो प्रैक्टिस करने के. देन ओनली दैट हैबिट इज गोइंग टू चेंज एंड दैट विल बिकम योर ट्रेट. वो हैबिट ही आपके ट्रेट्स बनते हैं बाद में जाके बच्चों, जो आपके OLQs जिनको आप बोलते हो. फाइन. और ऐसा नहीं है कल जाके तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड 99% आई एम ऑफ ट्रैक. बट बच्चा फोकस ऑन व्हाट 1%, है ना? जरूरी है. परसों लगेगा 98%, यार टाइम टेबल बनाया था कुछ भी पूरा नहीं हुआ. Need not to worry. Still 2% you were on track. Celebrate that. अगले दिन और एनर्जी के साथ उठना. डेली मॉर्निंग उठ के डिसाइड योर डे व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. डेली को जब जीना शुरू करोगे ना बच्चा, है ना, तो लॉन्ग टर्म गोल सबके हैं. फौजी सबको बनना है, ठीक है. फौजी बनने के लिए जो लैडर है, जो सीढ़ियां जौन सी चढ़नी है, उनके ऊपर मेहनत करना शुरू करो. छोटे छोटे गोल्स बनाओ और जब वो अचीव होते हैं देन पैट योरसेल्फ. आज तो मैंने ये अच्छा किया. दैट विल गिव यू दैट पॉजिटिव एनर्जी टू वर्क अहेड. एंड लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल. बहुत दूर की चिंता मत किया करो. आज जो किया आज को जियो, पूरा जियो, ईमानदारी से जियो, अच्छी नीयत के साथ जियो. आई एम श्योर आप सब अच्छे फौजियों के पास और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता. जहां है, जिस हाल में है, उसका बेस्ट जीते हैं. चाहे जंगल में छोड़ दो, चाहे आप -40 डिग्री में छोड़ दो, दे विल फाइंड देयर ओन वे टू स्टे हैप्पी इन देयर लाइफ एंड टू गिव द बेस्ट. सो यू गाइज ऑल्सो डोंट क्रेप व्हाट्सएवर रिसोर्सेज यू हैव. जितना आपके पास टाइम है, जितनी आपके पास है, उसका बेस्ट करते चले जाओ बस. ठीक है, चलिए फिर. Ma'am, I can say right now, each and every horizon is set by listening and the energy that you have given this speech. I'm That's glad. being channelized by all of us. I'm glad that. Next question we had was a very basic question, that what are the different gateways to get into the defense services after graduation? So बहुत सारे हैं बच्चे. फौज तो तुम्हें इतने तरीके देते हैं, बस तुम आ जाओ. हिम्मत मत हारो. We'll give you the number of ways to come and join because they are looking for young and bright boys and girls to join this organization. So after class 12th also you guys can, अगर यहाँ पे हमारे audiences हैं जिन्होंने register किया है, if there are girls, now NDA entry is open for girls also. So after 10+2 NDA is there. Is that clear? That is 10+2 के बाद आप NDA में जा सकते हो. NDA के लिए आपको physics, maths, chemistry is compulsory if you want to go and join Navy and Air Force wing in NDA. But maths is only compulsory for in case if you want to join for Army. Fine. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एंट्री स्कीम, फॉर्म्स कब निकलते हैं, फॉर्म कैसे निकलते हैं, कब नोटिफिकेशन निकलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, प्लीज गो एंड गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट प्लेस. एंड व्हाट इज द राइट प्लेस? द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जॉइन इंडियन आर्मी, दैट इज www.joinindianarmy.nic.in. This is the official website and complete details are given over there. Women officers entry scheme, men officers entry schemes, everything is given over there. Fine. क्लास 12 के बाद आप वहां जा सकते हो. और एक टेक्निकल एंट्री भी होती है बच्चा. टेक्निकल भी क्लास 10+2 के बाद होती है. उसमें आपकी डायरेक्ट SSB कॉल आती है, आपको रिटर्न नहीं देना होता. और उसमें आपको इंजीनियरिंग 5 इयर्स का कोर्स होता है जो आप वहीं जाके करते हैं. इज दैट क्लियर? गया के अंदर होती है, उसके बाद पुणे के अंदर जाके आपकी बची हुई ट्रेनिंग होती है. आफ्टर क्लास 12 के बाद आपकी जो ग्रेजुएट
के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो. अगेन देयर आर यूपीएससी एंट्री एंड नॉन यूपीएससी एंट्री एंड टेक्निकल एंट्री. यूपीएससी एंट्री यू नीड टू क्लियर योर सीडीएस एग्जाम, दैट इज द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज पेपर. इज दैट क्लियर? उसमें से ऑल दोज बच्चास, बॉयज, नॉट अभी गर्ल्स, boys who are good in mathematics, you can appear for English, Maths and General Knowledge paper, and you will go and join IMA entry, that as a permanent commission officer. But बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं होता है. नीड नॉट टू वरी, आप मैथ्स की ऑप्शन छोड़ दीजिए. आफ्टर लीविंग मैथ्स एज एन ऑप्शन, यू विल बी गोइंग एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर. यू विल बी डूइंग योर ट्रेनिंग इन OTA चेन्नई. इज दैट क्लियर? Once you will be doing your OTA चेन्नई, 10 साल वहां मिनिमम होते हैं. 14 साल की होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन. 10 साल मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस होती है. इन केस you will get an extension for 4 more years, and after 14 years if you have performed well in फौज, usually कोई ब्लंडर नहीं मारे हो बड़े बड़े आप लोगों ने, तो you get your PC also depending upon the vacancy, and that's a good option. Need not to worry. जिनका ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं होता है, still another option is there. You do law के बाद JAG entry की भी vacancies निकलती है. So that is the another option available with you. Another is the specialist entry, जहां पे होती है आपकी specialist entry, एक JAG की होती है, that is judge advocate journal, lawyers के लिए vacancies निकलती हैं ये, and you go as a short service commission officers only. आपकी training OTA चेन्नई में होती है. दूसरी NCC cadets की निकलती है specialist entry, C certificate with alpha grading. All those cadets who have C certificate with alpha grading, they go directly for their SSB. But humble request to all the NCC cadets, please you must apply for UPSC entry also, because NCC में vacancies बहुत कम होती है, competition बहुत high होता है. ठीक है, तो written clear करना भी कोई बड़ी चीज नहीं होती है बच्चा. So कोई भी information आप, फिर एक technical entries होती हैं different जो engineers के लिए होती है. ठीक है, आपको ये सारी की सारी आपको जो ये है स्कीम बच्चा, अभी जो भी रिगार्डिंग दिस एंट्री स्कीम एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, प्लीज आज का होमवर्क है, एक बार जाके जो मैंने बोला है www.joinindianarmy.nic.in, go and visit that website. You won't be needing anyone else guidance. That's a beautiful website. ठीक है, और जिसको मेडिकली क्वेश्चन पूछने हैं, मैं मेरे चश्मे का नंबर इतना है, मैं जा सकती हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मुझे सबको लगता है आई एम अ डॉक्टर. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. Fine. I have done my PhD in psychology. My name is Capt. Dr. Sunaina Singh. तो बच्चे मेरे पास इतने Instagram पे मैसेज भेजते हैं, मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, then I keep telling them. So there also there are policies. Left hand side में लिखा होता है policies. Policy के अंदर medical policy पूरी दी हुई है. See it. ऑफिसर बनना है यार इंडियन आर्मी का, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है, इतना तो पता होना चाहिए. किसी को क्यों तकलीफ देना कि मैम एंट्री स्कीम किया, बेटा वहां सब कुछ क्लियर लिखी हुई और बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में सब बच्चों के लिए. मेडिकल एंट्री, डेंटल एंट्री, ऑल एंट्रीज आर देयर, एवरीथिंग. फॉर्म कब निकलेगा, मेरिट लिस्ट किसकी निकली है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का SSB सेंटर्स कहां पे आया है, रोल नंबर कहां से आ रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर. तो यू ऑल गो एंड विजिट दैट वेबसाइट. फाइन. सो ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इज channelized to what this website. Fine. So tell them to get awareness from there. Sure, ma'am. We have posted the link in the box as well. And we can see the chat box being flooded with a lot of questions. So I'll read the questions from the chat box in a random manner. Yep. Someone has asked that, ma'am, please share your SSB experience and also your views on women in combat role. Acha, fine. So coming to this, fine. First, my SSB experience. मेरा first SSB was Air Force. I always wanted to become a pilot. Fine. तो मेरा first SSB होता है Air Force में. I was in MA first year at that time. ठीक है, तो मेरे MA first year, MA final year में थी, first year के हिसाब से आया था मेरे, because मैंने written नहीं किया था हमारे टाइम पे. On my cut-off basis, fine, I got that. So it was a direct call, SSB call आया था मेरा. वो मेरा first और last attempt था और बचपन से मुझे pilot बनना था. Imagine so kind of pressure I had on my shoulders at that time, on my heart, on my body, everywhere I was full of pressure when I had gone for that SSB. जब मैं वहाँ पे गई, 110 girls reported, 110 girls appeared for, सब flying के लिए आई थी, pilot aptitude battery test. Only one girl cleared that PABT, and luckily that was me. I was super happy. Oh my God, मेरा PABT clear हो गया. So that was the pilot aptitude battery test. उसके बाद बच्चा, मैंने 12th किया था नॉन मेडिकल के साथ, बट मैंने ग्रेजुएशन की थी साइकोलॉजी
ऑनर्स के अंदर, बिकॉज माई फंडा वॉज लाइक कि यार जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ठीक है, तो इतना ज्यादा क्यों पढ़ना, उसके बाद खेलते भी रहेंगे, 8 सब्जेक्ट ले लेते हैं, आराम से कॉलेज खेलेंगे और एक्टिविटीज करेंगे, साइंस तो पढ़ते पढ़ते ही हो जाएंगे, तो पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होती, मुझे ऐसे लगता। तो दैट्स व्हाई आई टुक साइकोलॉजी एंड आई वाज प्लेइंग थ्रू आउट एंड डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन कॉलेज, खूब मस्ती मारते थे, ठीक है। तो वो था, बट आई हैड गॉन ओवर देयर, everything went off well. Then came my interview. My interview went for 1 hour, more than I think 20 to 30 minutes. एक डेढ़ घंटे का मेरा इंटरव्यू था बच्चों। He asked me all technical questions, सूरज कैसे चमकता है, बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या होता है, न्यूटन ने कौन से लॉ दिए थे, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। और मैंने तो 12th के बाद कभी साइंस पढ़ी ही नहीं, और मैं वहां बैठ के सॉरी सर आई डोंट नो सर, सॉरी सर आई डोंट नो सर। ही मस्ट हैव आस्क्ड मी 100+ क्वेश्चंस, जिनमें से मैंने 5 या 7 आंसर किए होंगे, बीच में कुछ आते भी थे, बट इतना अच्छा फ्लो बन गया था कहने का, सॉरी सर आई डोंट नो सर, सॉरी सर आई डोंट नो सर, कि मैं बहुत ही फॉर्म में यही बोलती चली गई, सॉरी सर, एंड आई वाज अवेयर कि मेरा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आई वाज लैकिंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट। बिकॉज इफ यू रियली वांट टू गो इनटू द फ्लाइंग, या टेक्निकल नॉलेज इज मस्ट, इट इज मस्ट, बिकॉज जहाज उड़ाना ऐसी बात नहीं है यार, यू शुड बी अवेयर of each and everything, and your brain, how sharp you are, everything matters over there, fine. So मेरा वहां नहीं हुआ, तो again I was shattered, है अब क्या करूंगी, पता नहीं था। उसके बाद मेरा सेकंड आता है फौज का। फौज में मुझे सिर्फ आई अप्लाइड इट फॉर द एजुकेशन कोर, बिकॉज जब मेरा इसमें नहीं हुआ, आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। आई हैड नो अदर प्लान इन माई लाइफ। मुझे लगा जिंदगी हो गई खत्म, अब आगे नहीं चलेगी, बट ऐसा कभी नहीं होता है मेरी जान, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, वो ऐसी ही चलती रहती है। बस उस टाइम थोड़ा समझने की जरूरत होती है कि एक दरवाजा बंद हुआ है, तो आई थिंक 10 और दरवाजे हैं जो आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। देन आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ। तो MA फाइनल ईयर के बाद आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग जस्ट फॉर द पॉकेट मनी। मेरे इमीडिएट जूनियर्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया, कम ओवर यू नो आई विल टीच यू। तो वहां से मुझे पता चला दैट आई एम अ बॉर्न टीचर, आई एम सो पैशनेट अबाउट टीचिंग। देन आई ज्वाइंड आर्मी का, तो मैंने एजुकेशन कोर के लिए, एंड एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय GRE आल्सो, बिकॉज आई वांटेड टू डू माय PhD फ्रॉम अब्रॉड। मैं कहा मुझे साइकोलॉजी में PhD करनी है, US जाना है मुझे, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय GRE, आई वाज वेरी क्लियर। फौज के फॉर्म निकले, एजुकेशन की स्पेशलिस्ट एंट्री निकली, ठीक है, मैं कहा व्हाई नॉट टू अप्लाई फॉर दैट। देन आई अप्लाइड फॉर दैट, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैड गॉन ओवर देयर। मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कर्नल गडचा के पास गई थी, ही वाज इन मोहाली। मैं कहा सर मैं पिछली बार बहुत ब्लंडर मार के आई थी, इस बार मैं ज्यादा ब्लंडर ना मार दूं, तो आई हैव कम टू यू। सो ही जस्ट टोल्ड मी टेल मी अबाउट यू। उसने मुझे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का बताया, कहते बेसिक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिख के आ जाना, जिस स्टोरी में जो लगे, कहीं टूर्नामेंट खेल लेना, कहीं तैयारी कर लेना, जो तेरा मन हो, बट राइट योर ओन एक्सपीरियंस। मैं कहा फाइन सर आई विल डू दैट सर, राइट पॉजिटिव सेंटेंस। मैं कहा सर फाइन सर आई विल डू दैट सर। सर ने मुझे इतना ही बोला, रिटन कम्युनिकेशन वाज गुड, बिकॉज आई वाज राइटिंग रिसर्च पेपर, आई वाज डूइंग दैट ऑन ग्राउंड। व्हेन यू आर वर्किंग, एक्स्ट्रा मेहनत करने की, आई वाज इनटू द स्पोर्ट्स, OLQ सारे ही थे, कोई ऐसी कमी नहीं थी, कहीं छोड़ दो वहीं एडजस्ट हो जाते थे, ठीक है, कहीं सुला दिया वहीं सो गए, कहीं जो किया, सो वेरी क्लियर। एंड I always used to go out of my way to help my friends, everything. तो कोई ऐसा सर ने भी बोला you'll not face any problem, and seriously I didn't face any problem over there. तो जब मैं SSB के अंदर गई थी, और बच्चा SSB के अंदर जब आप स्टेशन पे पहुंचते हो, वहां से आपकी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इफ यू आर जेन्युइनली गुड पर्सन ना, तो लोग आपको पहचानते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी अच्छाई को। आप समझिए, वही बच्चे आपके साथ वॉशरूम में, वहां पे सॉरी आप रूम में भी शेयर कर रहे हैं, बेड भी शेयर कर रहे हैं, डाइनिंग एरिया भी जा रहे हैं, आप वॉशरूम्स भी सेम यूज कर रहे हो, वही बच्चे GTO में भी आपके साथ होंगे, जहां पे आपका ग्रुप का नजर आएगा। इफ यू आर अ जेन्युइन पर्सन, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो, और आप भी उनकी हेल्प और कॉन्फिडेंस से लेंगे। सो दैट इज व्हाट आई हैड अ वेरी, बिकॉज ग्रुप के अंदर व्हेन आई वाज एट द GTO, बहुत लोगों ने मुझे बुलाया था वहां पे। एंड व्हेन इट कम टू माय पर्सनल इंटरव्यू, बच्चा ऑन ग्राउंड, बच्चे ने काम किया है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। योर PIQ फॉर्म स्पीक्स अबाउट यू। So when I filled my PIQ form, उस टाइम मैं 20 nationals already खेल चुकी थी। Fine, I was the best all-rounder student of the school for 5 years. For my college, I was the best all-rounder student. आप सोच के देखिए, ठीक है बच्चा, ग्राउंड पे अगर आप लोगों ने मेहनत करी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां बेवकूफ लोग नहीं बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, और वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपको एक्सेप्ट, सरकार उनको पैसे इसलिए थोड़ी दे रही है जो बच्चा आया। और अगर कोई एक क्राइटेरिया, दे आर नॉट असेसिंग यू ऑन जनरल नॉलेज। प्लीज, आप सब लोगों को ये लगता है जनरल नॉलेज पे असेस करना होता तो वो आपका पेपर ले लेते। इतनी दिन क्यों सरकार इतना पैसा लगाती है आपको आने जाने का,
फेयर देती है, वहां रहने का खर्चा देती है, बिकॉज दे वांट टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. आर यू गेटिंग मी? सो व्हेन माय पर्सनल इंटरव्यू वाज देयर, आई वाज वेरी क्लियर. आई वाज सो जेन्युइन. मुझे कोई डर नहीं था. मुझे था हो गया तो अच्छा है. नहीं, ही आस्क्ड मी, नहीं तो व्हाट विल यू डू? मैं कहा नहीं सर, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर माय जीआरई. फाइन, I'll go out and I'll do my this PhD from US. कहते ओके परफेक्ट, देन व्हाई आर यू हियर? मैं कहा बिकॉज इंडियन आर्मी नीड्स गुड ऑफिसर्स लाइक मी, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू गिव माय बेस्ट. फाइन. तो उनके वे यार इतना कॉन्फिडेंस रखो. आप समझ रहे हो, उनको भी जरूरत है. ठीक है, दे आर ऑल्सो, दे नीड, सो हैव दैट कॉन्फिडेंस. और जब आप खुद को लेके सेल्फ अवेयर हो, दे डोंट नीड परफेक्ट ह्यूमन बींग्स मेरा बच्चा. नो बडी इज बॉर्न परफेक्ट, नो बडी डाइज परफेक्ट. प्रॉब्लम क्या होती है? यू शुड बी अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ, और आपको अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो. मेरे से एक बच्चे ने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा इन माय वन ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम. मैम कई बार हमें अपनी वीकनेस पता होती है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी वीकनेस, बट अगर हम वहां वो एक्सेप्ट कर ले, अगर कहीं पे हम ऐसे हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो OLQ से मैच नहीं करता है. और उसके बाद तो यही मतलब है कि हम अपने रिजेक्शन के बहुत वो जा रहे हैं. तो एक आधा फेक बनना और झूठ बोलना, मैं कहा यार तरस खाओ इंडियन आर्मी के ऊपर, प्लीज फेक मत हो जाओ. अगर आप एक बार फेक करके जेन्युइन ना बन के इंडियन आर्मी में आ भी गए बच्चे, व्हाट डू यू थिंक? दैट्स द अल्टीमेट. You will become a liability to this organization. Mark my words. Indian Army need genuine good people. और आपको हर रोज रुलाएगी ऑर्गेनाइजेशन फिर. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कॉम्पिटेंट लोग, कॉम्पिटेंट हो या ना हो, अच्छी नीयत वाले सच्चे इंसानों की जरूरत है. जितने चटके तुम कितने दिन कर लोगे यार? अगर वो OLQs नहीं है, एक्सेप्ट करके जेन्युइनली जो बंदा सीखना चाहता है, देन अगेन इट इज गुड. और अगर आप चटकी मार रहे हो, कितना असल में तो लगती नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशनल पीपल. आप और जब तक तीनों हाँ नहीं करते हैं, तब तक आपका SSB क्लियर नहीं होता है. दे ऑल विल सिट, दे ऑल हैव एवरीथिंग, दे ऑल नो एवरीथिंग अबाउट यू, दोस GTO, दोस साइकोलॉजिस्ट एंड personal interviewer also. Fine. So staying genuine is very important, and that is why I did so well in SSB. जब मेरी मेरिट भी आई, तब मुझे ये भी नहीं पता था मेरिट लिस्ट कुछ होती है बच्चों. ये तो अब पता चल रहा है. मेरा माय नेम वाज ऑन द टॉप फर्स्ट ना. जब मैं वहां भी गई तो आई वाज द फर्स्ट वन टू रीच ओवर देयर. तो मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम, हमें कुछ नहीं पता होता. वी वर सो रॉ. Fine, I think that was the beauty at that time. This Google power was not there. The information was flooded. We were not flooded with the इतनी इंफॉर्मेशन है बच्चों के पास, पता ही नहीं आता इसको प्रोसेस कैसा करना है. ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको चेंज करने में आपको पता है कि पर्सन इज असेसिंग यू. हमें नहीं पता था वो कौन से OLQ पे कहां असेस कर रहा है. हम जेन्युइन होके लगे हुए थे. ग्रुप की मदद करनी है तो करनी है, ऐसे करना है तो ऐसे करना है, जेन्युइनली भागना है तो भागना है. वी वर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर हार्ट. तो यहाँ बच्चे बहुत वैसे कर जाते हैं. तो लेट मी टेल टू ईच वन, स्टे जेन्युइन, स्टे ऑथेंटिक. दैट्स व्हाट दे आर नीडिंग. फाइन. चलो. Thank you so much, ma'am. And next question we had that, ma'am, how to convince our parents? I mean, they get protective when I discuss it with them. They want me to serve the country, but not just in the forces. तो वही मैं बोल रही हूँ बच्चे, योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सारा दिन बेड के ऊपर बैठ के नेटफ्लिक्स के चैनल चेंज करते हैं या मोबाइल के साथ गप्पे मारते रहते हैं, और फिर माँ बाप, हमें तो फौजी बनना है जी. बेचारे माँ बाप क्या करें? बेटा कुछ हरकतें तो ऐसी करो आपके अंदर लगे उनको कि ये फौजी बनने लायक है. आप समझिए बच्चा, प्लीज. सो योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स. आप चिल्लाते रहते हो, लड़ते रहते हो. मुझे पहले ऑन ग्राउंड कुछ कर तो लो. एटलीस्ट अपीयर, क्लियर योर रिटन, क्लियर योर SSB एंड देन कन्विंस देम. यू डोंट डू दैट. पर पहले ही हमारी क्या निकल आते हैं, नो माय पेरेंट्स, दिस आई कॉल इट डिफेंस मैकेनिज्म. बहाना शुरू कर देते हो आप ना. माय पेरेंट्स आर नॉट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग अप एन एफर्ट. बच्चा, यू फर्स्ट. किसके पेरेंट है यार? अगर आप जेन्युइनली अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जेन्युइनली. मेरे डैड ने मुझे कभी मना नहीं किया. यू विल नॉट बिलीव इट. आफ्टर क्लास 12th आई टोल्ड माय डैड मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी. कहते फिर क्या करेगी? मैं कहा मुझे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना. इंटेलिजेंट बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो मैं भी वहां जाऊंगी. डैडी कहते ओके चली जा, बिकॉज ही हैव ऑलवेज सीन मी वर्किंग हार्ड.
जब मैं पढ़ती थी तो मैं पढ़ती थी, जब मैं खेलती थी तो मैं खेलती थी, जब मैं जो काम करती थी अच्छी नियत के साथ करती थी, एंड आई यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स इन दैट. सो माय पेरेंट्स हैड दैट फेथ. अगर आप वो कहीं फेथ मिस कर रहे हो तो प्लीज डोंट ब्लेम योर पेरेंट. फर्स्ट स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ. हमें परफेक्ट पेरेंट्स चाहिए, परफेक्ट दुनिया चाहिए, परफेक्ट बॉयफ्रेंड, परफेक्ट गर्लफ्रेंड, सब कोई परफेक्ट, बस हम परफेक्ट ना हो. बच्चा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. थोड़ी संस्कृति बदले, थोड़ी हिया बदले, थोड़ी लक्ष्मी बदले, थोड़ी सलोनी, थोड़ा रोहित, थोड़ा दिव्यांशी, थोड़ी मैं, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. है ना? वो खुद को बदलना बच्चा बहुत आसान है, दूसरों को बदलने की. डोंट ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट. फर्स्ट गेट योरसेल्फ कन्विंस्ड व्हाई यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, एंड इफ यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड व्हाट आर द एफर्ट्स यू आर मेकिंग डेली इन योर लाइफ. एंड इफ यू हैव द रीजन फॉर दैट, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू कन्विंस एनीवन इन दिस वर्ल्ड. But if you cannot convince yourself, if you don't have the right reason, I am sure आप किसी को भी नहीं convince कर पाएंगे, ना अपने माँ बाप को, ना ही जाके personal interviewer को वहां जाके. He is going to ask you so many questions. That clarity, that convincing power needs to be there. So start practicing from home. चलिए. Thank you, ma'am. I'm sure that the person has got the right answer. And the next question we had was, someone asked that, ma'am, please also tell about AMC. मेडिकल कोर बेटा एएमसी के लिए देखिए, या तो आप अपना एग्जाम क्लियर करके एएफएमसी ज्वाइन करते हो, नहीं करते हो आपने मेडिकल कहीं से भी करी है तो आपकी नोटिफिकेशंस अगेन इट कीप कमिंग ऑन द सेम वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in. आपका एसएसबी नहीं होता, आपका नॉर्मल इंटरव्यू होता है बच्चा, ठीक है. उस इंटरव्यू के अंदर मोर ऑफ द टेक्निकल स्टफ दे आस्क, फाइन, रिगार्डिंग योर मेडिकल डिग्री एंड समथिंग, एंड अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल, बहुत ज्यादा नहीं होता है फॉर डॉक्टर्स. So you can find all the details in that only on the website when the forms are going to come and what kind of interviews will be there for that. Clear? Okay, ma'am. And one question we had, that having studied from Delhi University yourself, ma'am, what role do you think that DU plays in shaping personalities that would one day become future officers? Pakka se. It is such a mess, such carrying, but the kind of exposure you get, it is just about that. The kind of like-minded people you get, they influence it. And I'm telling you all, Delhi University students are doing so well. एक तो सबसे पहले क्रीमी ले लेती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, तो उन बच्चों को पढ़ाना भी इतना मुश्किल है. मैंने आई वाज टीचिंग इन मतलब डीयू ना, मेहनत करनी नहीं पड़ती थी. क्या मेहनत करनी, ऑलरेडी 98% बच्चा है जब वहां पे, ठीक है, तो कितनी मेहनत की जरूरत है. फिर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी, फिर अपॉर्चुनिटी, n number of opportunity you get in your college, the kind of exposure, there are so many clubs, there are so many, you know, आप थिएटर ज्वाइन कर लो, आप डांस क्लब ज्वाइन कर लो, आप अपना कितने सारे स्पोर्ट्स क्लब अलग से होता है, और कितनी सोसाइटीज बनी हुई है. For all these things gives you what? It gives you exposure, and exposure से क्या होता है? It grooms your personality. Are you getting me? It grooms your personality, और overview, OLQs अपने आप build होते चले जाते हैं. You improve your communication skills because the kind of people you meet over there. When I from मैं DU से जब मैं PU में गई थी, it was a culture shock for me. First day I entered the class, I was wearing IP college की sweatshirt, smartly dressed up, black color की hoodie with my 6-pocket pajama and the floaters. I entered the room and I was like कि आज तो कुछ पार्टी है. तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं जाके एक्सक्यूज मी करके चुपचाप क्लास में बैठ जाती हूँ. एंड वन ऑफ माय फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शी वाज लाइक, सुनैना तू नाइट सूट में क्यों आई है? एंड आई वाज लाइक कि मैंने कॉलेज की स्वेटशर्ट पहनी है एंड यू आर टेलिंग इट द नाइट सूट. मैं कहा तुम सब शादी में क्यों आए हो? मैं कहा हद हो गई है, क्लास अटेंड करने आए हो, शादी में आए हो तुम सब लोग? मैं कहा आई हैड ऑलवेज अ कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर आई एम डूइंग आई हैड दैट कॉन्फिडेंस. ठीक है, मुझे कभी किसी को देख के ऐसे नहीं लगा कि आई शुड चेंज लाइक समवन. The way I was, I have always stayed very, you know, मेरे को हमेशा अपनी रूट्स याद रही हैं, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग. सो यू शुड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू दैट. बच्चा, हम बहुत ज्यादा बच्चे ना दुनिया को देख के बदलने की कोशिश करते हैं. अगर आप दुनिया को देख के बदलोगे तो भीड़ में गुम होके रह जाओगे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान कभी नहीं बना पाओगे. वही जिंदगी में अच्छा करते हैं इंसान जो अपनी रूट से जुड़े होके दे नो. दिल्ली में आके दूसरे लोगों को देख के उन्हीं की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिया, उन्हीं की तरह बोलना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया. So how you are different? You are amongst them only. तो वो भीड़ के साथ तुम भी गुम हो जाओगे.
If you will stay different, whosoever wearing anything, what you feel comfortable, what is your style, stay the way you are. I have always stayed the way. I always loved wearing what I, gives me more confidence. My sari, my Indian wear. ठीक है, दुनिया पहनती है, पहनने दो. That's their, matlab, if they're comfortable with that, let them go ahead with that. But I don't want to change my own identity because of others. और आई थिंक डीयू के अंदर ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है. आई हैव सीन पीपल स्टेइंग सो ऑथेंटिक, दे हैव पर्पस, एंड लेट मी टेल यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब. आप बच्चे जो हो ना, हमें एक होप देते हो अभी भी पीछे. व्हाटसोएवर हैव हैपेंड इन दिस कंट्री, आई थिंक सही में मुझे लगता है एजुकेशन मेक्स अ डिफरेंस. when it comes to JNU, when it comes to DU, yes, these are the university where students are working on ground and taking education in true meaning. And true education is just not about facts and the figures and the cramming or the information. It is more about values, taking stands for right things, and you guys are doing that. So hats off to you all. और मैं सच कह रही हूँ, आप बच्चों को देख के मुझे ऐसे लगता है, निर्भय my son is 12 years old. मैं कहा नहीं, अच्छा फ्यूचर है, हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, देश को ऐसे कहीं नहीं जाने देंगे. दिस कंट्री हैज पावर, दिस कंट्री का यूथ हैज पावर, एंड दैट यूथ इज यू ऑल, प्लीज. और आप लोग जो कर रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, जब मैं कॉलेज में थी शायद मेरे में इतना फोकस नहीं था, इतना ज्यादा वो नहीं था. आप लोगों का एक्सपोजर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा आप लोग देखते हो, सीखते हो, तो ये बहुत अच्छा है. ठीक है, चलिए फिर. As you said that you should not go in the masses, but coincidentally we also have a motto for this year, the Department of Mathematics, that you have to be odd to be number one. Very true. Very true. So moving on to the next question, we have a question that, ma'am, how lady GC's training is different from men GC's as OTA, and do their trainings also differ? हल्का बेटा थोड़ा सा फिजिकल का स्टैंडर्ड्स का फर्क होता है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस राइट नाउ. इन माय टाइम यस इट वाज डिफरेंट. इन माय टाइम माय लेडी कैडेट्स की जो ट्रेनिंग होती थी, दैट वाज फॉर 6 months. नाउ इट इज एट पार विद जेंटलमैन कैडेट्स. द सेम अमाउंट ऑफ वेपन ट्रेनिंग विल बी देयर, फिजिकल ट्रेनिंग विल बी देयर, मिलिट्री ट्रेनिंग विल बी देयर, एवरीथिंग इज एट पार विद द ऑफिसर्स. यस, थोड़े से फिजिकल स्टैंडर्ड इन द टर्म्स ऑफ कि अगर हमारे को 100 मीटर्स का टाइमिंग के अंदर डिफरेंस था, और ये टाइमिंग वर्ल्ड वाइड है बेटा. ठीक है, जब ओलंपिक्स के अंदर भी लड़का भागता है और जब लड़की भागती है तो अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं सेटिंग्स के. तो सिमिलरली हेयर आल्सो, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़े से, बट द ट्रेनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम नाउ. Okay, ma'am. And Rohit had one question that he posted in the chat box. Please ask ma'am about her SSB guidance program, because I have given 2 SSBs and I wanted to discuss about it, but I don't have any SSB schedule. एक मिनट दो बच्चा, मैं ना इसमें डाल रही हूँ AMV सिमरान, जस्ट गिव मी 1 minute. मैं चैट बॉक्स खोल सकती हूँ बच्चा? Yes, ma'am, you can access the chats. अच्छा, I'm adding over there all my social media accounts बच्चा. Fine. तो आप लोग उसके ऊपर, मुझे कहाँ गया चैट बॉक्स, ये रहा चैट बॉक्स. ठीक है, सो रोहित यू कैन मैसेज मी ओवर देयर. फाइन, माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर, ये मैंने भेज दिया है. ठीक है, ये पता नहीं, ये तो इसमें आ नहीं रहे हैं, अजीब सा. ये व्हाट्सएप नंबर देख लेना बेटा, उससे पता चल जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है. अदरवाइज माय इंस्टा अकाउंट इज देयर, कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह. ठीक है, आप उसके ऊपर मेरे को क्वेरी भेज दिया करो, मैं वहां पे मोस्टली कोशिश करती हूँ बच्चों की आंसर करने की क्वेरीज. ठीक है, आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिप्लाई. ठीक है, सो दीज आर माय, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल आल्सो, कैप्टन सुनैना सिंह करके. ठीक है, वहां पे भी आई की पोस्टिंग. व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओगे तो फिर वहां भी आई की पोस्टिंग ऑन माय स्टेटस व्हेन एवर आई स्टार्ट विद माय गाइडेंस प्रोग्राम. एक तो अभी चल रहा है, नेक्स्ट देखो कब शुरू होता है. क्लियर, चलिए. एनीवन एल्स? Much, ma'am. We'll also share all the details in the group that we have made for all the participants. No issues at all. I'll share it with you. I think मैं संस्कृति का नंबर है मेरे पास, मैं संस्कृति के साथ शेयर कर दूंगी. ठीक है, चलिए. आई होप मैं समझा पाई आप लोगों को, थोड़ी क्वेरी क्लियर कर पाई, एंड क्लियर टू एवरीवन. चलिए फिर. Any other question you have here? Yeah, we had one more question from Rutuja, that, ma'am, could you please elaborate about intelligence corp? What is it exactly? What kind of work do officers do in that corp? इंट कोर के अंदर बेटा बेसिकली 2 तरह का जॉब होता है. ठीक है, एक तो आप सोर्सेज बनाते हैं, यू गेट द इंफॉर्मेशन, यू गेट द इंटेलिजेंस फ्रॉम द, मतलब दूसरी
इंटेलिजेंस लेके आना बाहर की, सोर्सेज बनाना, इंफॉर्मेशन लेके आना रिगार्डिंग योर एनिमी कंट्रीज एंड ऑल अबाउट दैट। फाइन। सेकंड होते हैं सिक्योरिटी ऑफ आवर ओन, हमारी सिक्योरिटी, हमारी अंदर की सिक्योरिटी, कोर हेडक्वार्टर्स की, बाकी यूनिट्स की, एवरीथिंग। सो यू लुक आफ्टर दैट ऑल्सो। फाइन। तो ये दोनों एरिया होते हैं। लेडीज के लिए, जो विमेन ऑफिसर्स के लिए, उनके लिए एक और प्रोग्राम शुरू किया हुआ उन्होंने, सैटेलाइट इमेजरी एंड इंटरप्रिटेशन को। और उसमें क्या होती है, सैटेलाइट से इमेजेस आते हैं, यू नीड टू इंटरप्रेट दोस इमेजेस। फाइन। और जब आप इंटरप्रेट करते हो, फिर आप उनको भेजते हो आगे ना, कि व्हाट ऑल यू कैन, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा हो तो नहीं रहे, या कहीं और एरिया बिल्ड हो रहा है। सो वो आईआईटीज के अंदर पोस्टेड होते हैं इन आर्मी। सो दिस इज द बेसिक वर्क इंट ऑफिसर टू। फाइन। इट्स अ गुड, अच्छी जॉब है अपना, आराम से। हाँ, रेजिमेंटेशन कम होता है, लाइक इन्फेंट्री के अंदर रेजिमेंटेशन बहुत होता है, एंड एवरीथिंग इज देयर। इसके अंदर यू कीप गेटिंग पोस्टेड, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आप पोस्टिंग जाते हैं। Okay, ma'am. Thank you. And one last question from our side, that, ma'am, any golden tip from your side to all the defense aspirants? एक ही गोल्डन टिप है, स्टे ऑथेंटिक, स्टे जेन्युइन। एक अच्छा इंसान चाहिए फौज में, और अच्छे इंसान की तुम सबको डिफिनेशन पता है ना, आप सबको पता है व्हाट अ जेन्युइन पर्सन इज। ठीक है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग यार, ऑन ग्राउंड, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल इन योर डे टू डे लाइफ। हर रिलेशनशिप्स के साथ जस्टिस कीजिए। एक तो हमें ये लगता है एक ने धोखा दे दिया तो सारी दुनिया गंदी। बच्चा प्लीज, दिस वर्ल्ड, अगर इतनी सारी दुनिया गंदी होती तो आज खत्म हो चुका होता सब कुछ। देयर आर गुड जेन्युइन पीपल। और जो भी इंसान आई थिंक पैदा होता है, नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी के साथ पैदा होता है। आर यू गेटिंग मी? लोग डिफरेंट हो सकते हैं, सही या गलत नहीं होते। आर यू गेटिंग मी? सो डोंट एवर ट्राई टू प्रूव एनीवन राइट और रॉन्ग। दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू, दैट्स इट। फाइन। और चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी उसके बाद आप सब लोगों को। फाइन। एंड लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। लेट्स मेक इट मोर सिंपल। डोंट कॉम्प्लिकेट विद योर ओवर थिंकिंग, विद योर अदर फीलिंग, जेलसी, कॉम्पिटिशन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, साइड में रखो उनको। लिव विद ग्रेटिट्यूड, व्हाटसोएवर यू हैव, इट्स गुड फॉर यू। फाइन। लिव योर लाइफ विद ग्रेटिट्यूड। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है। दिस वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन। फाइन। जैसे हो वैसे दिखेगा सब कुछ। फाइन। तो उसकी तरह से जीना शुरू करो। लेट्स मेक आवर लाइफ मोर सिंपल, मोर ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर एवरीवन अराउंड अस। फाइन। दैट्स द गोल्डन टिप। स्टे जेन्युइन। Thank you so much, ma'am. And I believe this was one of the most enriching sessions of Lakshya Career Series. I hope so. Thank you so much here. Thank you, Anvesha, and thank you to all of you. So kind of you. इतने लोग मेरे को दिखे हैं कैमरा ऑन करके। जब आप लोग कैमरा ऑन कर देते हो ना, तो जो स्पीकर होता है उसका जोश और बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट कंप्यूटर यार। कंप्यूटर से तो वन वे होती है इंटरेक्शन, ऐसा लगता है खुद से ही बात कर रहे हैं। तब ये इंस्टा लाइव सेशन मुझे इतने अजीब लगते हैं, एंड आई ऑलवेज टेल यार, व्हाई नॉट टू डू दिस one to one, webinars. At least I see my students, I see smile on their faces, है ना, देख के कितना अच्छा लगता है, और जोश आ जाता है मेरे मेरे जैसे के अंदर ना, कि चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फाइन। चलिए, एंड प्लीज डू शेयर योर फीडबैक इधर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ऑन माय इंस्टाग्राम, और विद हिया, और विद संस्कृति, एंड डू शेयर विद मी। आप लोगों के छोटे छोटे मैसेजेस हमारा दिन बना देते हैं। फाइन। चलिए फिर। Ma'am, please wait for 2 more minutes. We want to end on a good note. Yeah, हाँ we जी। had Professor Dr. Preeti Dharmara, ma'am, who attended the session, but she had to leave urgently due to some work. No issue. She has posted one message in the chat box. She writes, "Thank you, Dr. Sunaina, for sharing your life experiences on this platform to motivate our students. You are really very awesome and inspiring." Thank you so much. Please say thank you to her on my behalf. पक्का से बोल देना, Sure. ठीक है? Now, चलिए। I would like to invite Sanskriti Jha, the Vice President of Mathematics Department, to give the vote of thanks on behalf of the whole department. Thank you so much here. Okay, so greeting to one and all present here. I, Sanskriti Jha, deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable session. First and foremost, I thank our speaker for the evening, Sunaina ma'am. Thank you so much, ma'am, for taking out time despite of your busy schedule for gracing this session with your enlightening words and insights.
I thank our convener, Dr. Arvind, for his valuable contributions, our teachers for supporting us in organizing such sessions, and standing as I am also grateful to our President Anvisha Kushwaha for being the catalyst that stimulated us to do our best. Events like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. We are very fortunate to be backed by a team of proactive and dedicated student council members. A special mention to our moderator of the evening, Hia. Thank you so much, Hia. Finally, I am immensely thankful to all the attendees of this session for being patient and attentive throughout the session. Please fill the feedback form. It is there in the chat box and in the WhatsApp group as well. The recording of the session will be uploaded on our YouTube channel. You can access it from there. Its link will be shared on WhatsApp group. Stay tuned for many such sessions. The webinar hereby stands completed from our side. You may start leaving. Thank you so much. Thank you, Sanskriti, and thank you for sir all lovely compliments which you are just messaging on that. Thank you so much to each one of you. Stay happy, stay Meet blessed. you in offline mode also Thank if you so college much. reopens. हाँ डेफिनेटली आई वुड लव टू कम ठीक है ऑफलाइन मोड में और ज्यादा मजा आता है ठीक है टेल दिस कोरोना टू गो अवे जैसे रेन रेन गो अवे था कोरोना कोरोना गो अवे वी ऑल वांट टू प्ले नाउ चलिए फिर ठीक है थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू कीप स्माइलिंग बच्चा लाइफ इज ब्यूटीफुल फाइन एंड यू ऑल आर ब्लेस्ड फाइन थैंक यू बाय बाय टेक केयर Thank you so much. बाय 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 Thank you so much, ma'am. बाय बाय टेक केयर बाय बाय